बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से डेफिनेटली सबकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई है। जिस तरह से आप लोग डिस्टर्ब हुए हैं, स्टडीज़ डिस्टर्ब हुई हैं, इसी तरह से सारे का सारा सिनेरियो जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि सारा सीन ही चेंज हो गया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस तरह से हम सब लोग अपनी लाइफ की एक भाग दौड़ में मशगूल थे और आप जानते हैं कि ज़िंदगी में कभी टाइम ही नहीं था हमारे पास कि हम कुछ सोच पाएँ कि लाइफ जो है उसमें पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी कोई काम है। फैमिली मेम्बर्स को हम हमेशा शिकायत करते थे कि फैमिली मेम्बर्स को हम टाइम नहीं दे पा रहे। तो एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होता ही छोटा है, छोटे ऑर्गेनिज़म्स को ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर दिया, और ना सिर्फ हमारी लाइफ को, बहुत एडवांस कंट्रीज़ जो कि समझते थे कि वो सुपर पावर्स हैं और जिनका बड़ा कंट्रोल था हेल्थ सिस्टम पे, वो भी इस वक्त जो है इस ऑर्गेनिज़म के सामने, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, हमें इस मुसीबत से, इस आफत से, इस बीमारी से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। आमीन। स्टूडेंट्स, पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला जहाँ से टूटा था, मेरा ख्याल है कि अब हमें उसको वहीं से जोड़ना चाहिए। यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो टाइम टू टाइम गाइडलाइन दे रहा है यूनिवर्सिटीज़ को, और हमें इस सिस्टम में, इस सूरत हाल में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि हम ज़्यादा मेहनत करके अपनी तमाम डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर सकें। तो मेरा ख्याल आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, और ये पार्टिकुलर रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जस्ट हम प्रीवियस जो रिएक्शंस हमने पढ़ लिए थे, हम उनको एक बार गो थ्रू कर लें ताकि जो है आपकी रिवीजन हो जाए। ग्लूकोज, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको शो की गई है बीटा डी ग्लूकोज की, दैट इज़ नोन एज बीटा डी ग्लूकोपिरानोज due to its specific configuration. And we all know that monosaccharides, they contain polyhydroxy substitutions. They are they are known as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones, and when they are in cyclized form, the aldehydic or ketonic functionality that becomes part of the cyclic ring, and corresponding hydroxyl substitutions, they are present across the ring. So these hydroxyl groups, they are acting as alcohols, and similar to the process when alcohols are converted into esters, alcohols are treated with corresponding carboxylic acids in the presence of sulfuric acid as a catalyst, and we get esters. So here these monosaccharides could also be converted into esters. तो
जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल और कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स को हासिल करने के लिए हम मोनोसैकेराइड्स के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाते हैं। तो जो कंडीशन सूटेबल हैं इन मोनोसैकेराइड्स की कन्वर्जन के लिए एस्टर्स में, उनमें पहली कंडीशंस आपके पास सामने रखी गई है। पहली कंडीशन दैट इज़ बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड एज एसाइलेटिंग रिएजेंट। सो acetic anhydride is a very reactive substance, as you could visualize from its structure that the carbonyl carbon atom is linked to highly electron withdrawing oxygen atoms. So, this electron deficiency on the carbonyl carbon in acetic anhydride, this makes it highly reactive substance. On the other hand, this pentahydroxy molecule, which is beta D glucopyranose, it could use its hydroxyl groups, which are electron rich parts and which bear lone pair of electrons. These electron rich groups, they could attack at the electron deficient carbon atoms of the acetic anhydride, and the glucose is being converted into penta O acylated product. So, you could see from this reaction that the O acylation here, it is not selectively taking place at any given hydroxyl group, while this O acylation is being carried out on all the 5 hydroxyl groups, because all the 5 are hydroxyl, all the 5 hydroxyl groups bear lone pair of electrons, and all the 5 hydroxyl groups, they are electron rich parts. So, here you could not selectively use any given hydroxyl group for the O acylation reaction. On the other hand, you could notice here that acetic anhydride is highly reactive species. That is why the reaction conditions we are using here, they are quite low temperature, that is 0 degree Celsius. Base is being used to quench the byproduct acetic acid which would be formed in this reaction. So, due to the reactivity of acetic anhydride, we are getting the O acylated product in quite high yield, which is 91%. We could carry out this O acylation reaction by using another reagent, that is acetyl chloride. But notice that here I have not shown that we could O acylate this product by using acetic acid, because we cannot use acetic acid for the esterification of this monosaccharide. Why? You could see here after discussing the second example, when we are using acetyl chloride, it is also very reactive substance due to the highly electron deficient carbon atom. So, all the 5 hydroxyl groups, they are again being O acylated by using acetyl chloride, while if we use acetic acid here, then OH negative hydroxide ion would have to act as a leaving group, and you know that hydroxide ion is a poor leaving group. That is why we could use acetic anhydride or acetyl chloride for the O acylation reaction of monosaccharides, but could not use here acetic acid for O acylation reaction. The next reaction is etherification reaction. We are starting with alpha D glucopyranose. We have previously studied Williamson ether synthesis. If I could remind you that Williamson ether synthesis takes place
by treating alcohol with the alkyl halides in the presence of strong base. So, alkyl halides are converted into ethers by using this reaction. Here, in this case, we are using the similar conditions. We have penta-hydroxy substituted molecule alpha D glucose. We treat it with methyl iodide in the presence of a base silver oxide, and we are getting a penta-O-methylated product. Again, in this case as well, the selectivity at any given hydroxyl group could not be performed. Why? Just due to the reason that all these hydroxyl groups are electron rich and methyl iodide is quite reactive. That is why we could not control the selectivity, selective formation of any given selective O-methylated product. On the other hand, you would also have noticed that we are using silver oxide as a replacement to sodium hydroxide. Why? Because in the presence of strong bases, these monosaccharides tend to degrade. That is why we are using here a mild base, that is silver oxide. The next reaction is glycoside formation. As you have already studied that the acetal formation reactions, हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को यूज़ करते हैं और वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइडस एसिड्स, एंड देन these aldehydes or ketones are converted into hemiacetal, and under the same conditions this hemiacetal is converted into acetal. ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका मैकेनिज़्म जो है एक बार फिर अपने नोट्स में प्रैक्टिस करें. सो इफ़ यू कुड नोटिस ऑन द साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट, that is in this case beta hydroxy beta D glucopyranose, which is given here, you could see that it is a cyclic hemiacetal. In cyclized form, the monosaccharides are cyclic hemiacetals, and these cyclic hemiacetals they undergo a reaction with alcohol in the presence of acid to form corresponding glycosides. The acetals in case of monosaccharides, they are known as glycosides. So, in this particular reaction we are using methanol as a nucleophile to replace the hydroxyl group at anomeric center to form corresponding methoxy substituted molecule, which is an acetal. In general, you could say it as an acetal, but specifically these acetals of monosaccharides, they are known as glycosides. So, this methyl D-glucopyranoside is basically a glycoside. In this case, you could notice that we are getting a mixture of two products. The alpha substituted product is 66%, while beta substituted product is 33%. Why? To answer this why, we would have to check its mechanism. The HCl is being used to protonate the hydroxyl group and to convert it into a relatively good leaving group. Now, let us assume that the hydroxyl group at anomeric center is protonated. जबकि आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि सिर्फ एनोमेरिक सेंटर वाला हाइड्रोक्सिल ही प्रोटोनेट होगा. द अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वुड आल्सो बी प्रोटोनेटेड एज वेल. लेकिन
अगर एनोमेरिक सेंटर वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेट होता है तो उसकी रिमूवल की पॉसिबिलिटी दूसरे की निस्बत ज़्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि इसकी विसिनिटी में ऑक्सीजन एटम है विच बियर्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कुड प्ले इट्स रोल फॉर द रिमूवल ऑफ दिस वाटर H2O which is formed as a good living group here. So when this OH at anomeric center is protonated, methanol a nucleophile here, it would have only one possibility through SN2 mechanism to attack through axial position. So if this reaction follows SN2 mechanism, the methanol would attack from the axial side and the methoxy group in the product would be substituted at alpha position. But on the other hand, if water is removed before the attack of nucleophile, that is the lone pair of the oxygen atom present in the vicinity, they are used for the removal of water as a good living group, then in that case this site of the molecule would be planar in nature, and now the attacking nucleophile would have equal possibility to attack from axial site or from equatorial site. So statistically the possibility of attack from the axial side is double as compared to the possibility of attack from equatorial side. That is why we are getting here 66% yield of the alpha product, while the formation of beta product is being taken place only 33%. As I have mentioned that these glycosides, they are abundant in nature and they play many biologically important role. For example, digitoxin, which is used for the treatment of heart disease, it is a glycoside which consists of a steroidal alcohol linked to a trisaccharide. So by using similar reactions, you could form a variety of glycoside depending upon the nature of alcohol used. These glycosides could also be prepared by using another well-known reaction, that is Koenigs-Knorr reaction. This Koenigs-Knorr reaction is very famous. जब भी आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन क्यों फेमस है। इसके लिए भी हम स्टार्ट मोनोसैकेराइड से लेते हैं। मोनोसैकेराइड इज O ethylated by using acetic anhydride, and we get, as I mentioned here in this reaction, the starting material is used penta O-acetyl beta D glucopyranose. So this molecule, which is being shown here as a starting material, it undergo reaction with HBr to form alpha bromo substituted product. You could notice here that the bromine is Br part of the molecule HBr. It is electron rich and it could attack from the opposite side of the leaving group. The only possibility in this starting material is that Br electron rich Br could attack as a nucleophile from the axial site. On the other hand, if you use alpha D glucose as a starting material, then Br would attack from the equatorial site. So the formation of monosaccharide base alkyl halide, as in this case it is glucose based alkyl bromide, it could have
both these configurations depending upon the configuration of starting material. अगर आप बीटा रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, बीटा डी ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपको ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ा पोजीशन में मिलेगी, और अगर आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन बीटा पोजीशन पे मिलेगी। तो ये जो अल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पे गेन कर लिया है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट starting material for the formation of a range of a wide range of the glycosides. अल्काइल हैलाइड्स के बारे में आप बहुत वेल अवेयर हैं कि अल्काइल हैलाइड्स could be converted into a number of organic families. आप इनको एमाइंस में, अल्कोहल्स में, ईथर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड बेस्ड अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन, दैट इज़ अ मेजर माइलस्टोन। इससे आगे आप अपनी मर्ज़ी के ग्लाइकोसाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में we are using 4-methoxy substituted phenol, 4-methoxy phenol as a reactant, and this 4-methoxy phenol is attacking from the beta site because the bromo group is attached on the axial position. So this 4-methoxy phenol would attack from the equatorial site to form corresponding methyl or butene. But it was noticed that whatever the starting material is, whether it is alpha bromo substituted starting material or beta bromo substituted starting material, the product is always beta product. Why? इसका जवाब मिलेगा जब आप इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। ये है मैकेनिज़्म आपके सामने। ब्रोमो पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकती है, अल्फ़ा ब्रोमो भी और बीटा भी, इसी वजह से इसको ज़िगज़ैग बॉन्ड से शो किया गया। सिंस Br नेगेटिव इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, सो दिस ऑक्सीजन एटम विच इज़ प्रेजेंट इन द विसिनिटी, it uses its lone pair of electrons to attack on the electron deficient carbon atom, and Br negative is removed, resulting in the formation of non-isolatable intermediate, which is shown here. It is highly reactive intermediate because the oxygen atom bears positive charge. So due to high electron deficiency of this carbon atom, this anomeric carbon atom, the acetyl group in the vicinity, it attacks on this carbon atom and form a cyclized product. Now the attacking nucleophile, which could be any phenoxide or any alkoxide, it could attack only from equatorial site because axial site is now occupied by a neighboring group. This effect is known as neighboring group effect. Now the attack could only take place from equatorial side and the product is formed beta glycoside. So by studying this mechanism, you would have noticed that the Koenigsegg reaction is a versatile reaction which could be used for the formation of a variety of glycosides. You could check recent literature reports for the synthetic applications of Koenigsegg reaction. The next reaction we will discuss is reduction of monosaccharides. जैसा कि आप जानते हैं कि साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स में, साइक्लिक शुगर्स में कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिड्यूसिंग ग्रुप जो है वो अटैक कर पाए। हाँ, अगर वो अटैक करेगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हाइड्रोजन पे हाइड्राइड अटैक करेगा,
resulting in the formation of H2, that is hydrogen gas, and corresponding sodium salt. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि cyclic structures exist in equilibrium with the open chain structures. जैसे यहाँ पे ये बीटा डी ग्लूकोपिरानोज है, it exists in the equilibrium with open chain structure of D glucose, as well as this equilibrium is present, as we have previously discussed, with the alpha D glucopiranose. So, in equilibrium form there could be three products, that is beta D glucopiranose, open chain structure of D glucose, and alpha D glucopiranose, which is not shown here. So, as soon as the open chain structure is formed and in the presence of sodium borohydride, which is a strong reducing agent, the formyl group is readily reduced into corresponding alcohol. And this type of molecule, which is shown here, this family is known as aldetols. और इस स्पेसिफिक केस में we are using D glucose and this product is known as D glucitol. Oxidation of monosaccharides, जैसे हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर उसमें कोई ऐसा रिएक्टिव ग्रुप नहीं था कि जिसको आप रिड्यूस कर पाते, सिवाय इसके कि आप OH को जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग ONA साल्ट में कन्वर्ट कर पाए. इसी तरह से अब यहाँ पे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है. साइक्लिक स्ट्रक्चर यूँ ही ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में आती है. यू कुड यूज़ ब्रोमीन वाटर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ब्रोमीन वाटर इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट कुड ऑक्सीडाइज formyl group into corresponding carboxylic acid group. And the specific family is known as aldonic acids. Aldonic acids bear COOH group at the position of formyl group of the monosaccharides. On the other hand, if we are using nitric acid as an oxidizing agent, as you all know that nitric acid is a strong oxidizing agent, then in addition to the oxidation of formyl group, the CH2OH group lying in the base, it is also oxidized into COOH group. This family is known as alderic acid, and this particular product is known as D-glucaric acid. अब हम आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे. इसके पास प्रेजेंट है CH2OH ग्रुप. अगर आप नंबरिंग करें तो एनोमेरिक कार्बन को अगर आप नंबर 1 देते हैं तो ये CH2OH ग्रुप जो है वो साइक्लिक रिंग की 5 कार्बन के साथ अटैच है. 5th कार्बन के साथ CH2OH ग्रुप अटैच है. This CH2OH group could be oxidized as in biosynthesis, biological synthesis, that is synthesis in the plants. Various enzymes are used in the biological mechanisms, and in the presence of these enzymes, this CH2OH group is converted into COOH group, resulting in the formation of family uronic acid. This particular product is known as D-glucuronic acid. So dear students, आज हमने जो है कुछ रिएक्शंस मोनोसैकेराइड के पढ़े. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन रिएक्शंस को फॉलो किया होगा. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.